title. Apart from this, she's an avid trekker, a health enthusiast, a qualified. Welcome to yet another episode of GOQii Health Stories. Today's story is very, very special because the guest who I have is actually unstoppable. And this is not just unstoppable from the word unstoppable, she's been officially given this title. Apart from this, she's an avid trekker, a health enthusiast, a qualified senior management personnel, and more importantly, she's the perfect combination of beauty and brain. She's one of the winners of several, not one, but several beauty contests. She does not have what we say a very normal upbringing. She's come through a lot of challenges. But I think today's story is all about how she has given her everything and changed not only herself, but also created an impact in the society. जो आप आज जिसको मिलने वाले हैं वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है. So without much ado, I want to now welcome my guest on today's show, who is none other than the unstoppable Suneeta. Welcome, welcome Suneeta. क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया. नमस्ते. Good evening. And हम देख रहे हैं that you are also joined by your two pillars, your mother, Mrs. Mane, and your brother, Santosh, who are also part of the journey. And of course, you have two other siblings, Joe, I think, who are busy doing other things. Right. But this story and what you have done, Suneeta, is so amazing, so remarkable. तो मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि how did this all start? मतलब ये किस तरह आपने गोकी के परिवार में, गोकी फैमिली में आपने एंट्री कैसे ली? क्योंकि मुझे जहां तक पता है स्टार्टिंग में आप इतना एक्साइटेड नहीं थी गोकी पे इतना. First of all, thank you so very much for all the kind words, and it means a lot for me. And as you said, these are actually two pillars of my life. How I started my GOQii journey, I would say, or a blessing in my life, like how did I get connected to it? So my one of my office colleagues, he had introduced GOQii Tracker to me. In fact, he wanted as a gift on his birthday to quit smoking. I was like, okay, fine. This is a good idea to give someone because I believe in giving something which is be useful for the person. So I gifted him, and I actually observed how the coaches were calling him and trying to set habits for him and everything. But I don't think so he has used it or he quit smoking. But later that year, 2017, I'm talking about, that year I was diagnosed with hypothyroid. And again, I did not think of a GOQii at that time because it didn't struck me somehow. And then what I did is I was getting a lot of symptoms, allergies. I was not knowing what exactly to do. I had very big acne on my face, painful acne. I was not careful of my appearance, but they were paining a lot. And my entire lifestyle was on a toss. Like I used to get irritated, smaller thing. Stress was becoming unmanageable. I went to a lot of doctors, like doctor to doctor. My mom used to accompany me. वो हमेशा मेरे साथ थी और हमें समझ में ही नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है. So then after doing like 4-5 doctors and अलग-अलग तरह की medicines खाने के बाद मैंने give up कर दिया. I was like, no, I cannot do this. I cannot start my day with a pill and I feel like everything is right now, like ऐसे नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं जी सकती. और I am the person who believes in prevention is better than cure.
and all of a sudden I was like, ये क्या है, ये hypothyroid होता क्या है, it's why it has happened to me. So I thought of getting, you know, tracker for me and start मतलब मुझे लगा कि इतने सारे डॉक्टर्स के पास जाने से अच्छा है मैं एक मतलब गोकी, जो मैंने बहुत पढ़ा गोकी के बारे में, मेरे फ्रेंड का स्टोरी सुना बट ही कुडंट कंटिन्यू, बट मैंने बाकी स्टोरीज पढ़ी एंड आई थॉट लेट मी गिव अ ट्राई, एंड आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अ गोकी कोच. It was such a happiness because जब आपको हाइपोथायराइड होता है you never know कि आप वेट तो बढ़ ही रहा है, बहुत सारे एलर्जीज आ रहे हैं, आप नॉर्मल खाना नहीं खा सकते हो, आपको पूरा आपका लाइफस्टाइल स्ट्रीमलाइन करना है, स्ट्रेस मैनेज करना है. सो मेरी कोच, थैंक गॉड आई हैड दैट कोच एट द स्टार्ट. She helped me a lot managing my stress. We started with very small habits, but they were impactful, they were curing from root. So slowly 2017 2018 I started my GOQii journey. 2019 में I was like, मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो गया था. I had a very little acne. Before we go to 2019, you said one very important thing कि आपकी लाइफ में GOQii Coach आए and that was a very important milestone. Turning point, yes. Turning point. But उससे पहले भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा turning point था, और वो turning point था your first coach which is your mother. And बोलते हैं ना कि पेरेंट्स या आपके जो फर्स्ट कोच, बाकी के कोच तो बाद में आते हैं, राइट? बचपन से जो आपको कोचिंग मिली, जो आपका आज जो आपका इतना सक्सेसफुल करियर है, इतना सक्सेसफुल आपने जो किया है, वो पूरा क्रेडिट आपकी मॉम को जाता है, आपकी मदर मिसेस माने को जाता है. तो मुझे पहले पूछना है मिसेस माने, आप मेरे को ये बताओ कि हाउ वाज सुनीता लाइक अ किड? बचपन में इसने क्या किया? ऐसी कुछ अलग मस्ती कर रही थी? मतलब इतना जो इन्होंने अचीव किया है, आपने इनको क्या खिला के बड़ा किया, वो पहले बताओ. हम तो थायराइड की बात करते हैं. सर ऐसा कुछ नहीं है, वो बचपन से ही टैलेंट है और वो सब उसका परफेक्ट रहता है. और अभी तो इतना परफेक्ट है कि उसका वो GOQii पेन भी ना, तब से सबका लाइफ उसने चेंज किया है. अरे वाह. एकदम सब खाना पीना सब टाइम पे, सुबह उठ के सब फ्रूट खाना है, ये सब उसका एकदम टाइम सबको सुधार दिया उन्होंने. अरे वाह. हाँ, सब सोना टाइम पे, खाना टाइम पे, सब कौन सा दवाई कौन सा कोच को पूछना, अरे मम्मी ये करना है वो करना है, सब हमको उसने लाइफ बनाई उसके GOQii की वजह से. हम सुधर गए. पर मुझे आप सुधरने से पहले भी आप, मैं पूछ रहा हूँ, जब ये स्कूल में थी या कॉलेज में थी, तब आपने क्या देखा इनमें जो ये इतना फर्क था? ये सुबह बचपन से ही सर टैलेंट था उसमें कि हमको पढ़ाना है, पापा नहीं है, हमको ये छोटे दूसरे भाई है, इनको साथ में तो काम पे जाते थे, मैं तो मेड का काम की सर. तो मेरी लड़की ने बहुत बच्चे लोग को पढ़ाई, खुद भी इतना टैलेंट है इसमें कि दोस्त नहीं कोई नहीं, खाली पढ़ाई और घर का पूरा काम संभालना, पूरा टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, कोई नहीं सोता तो उसको डांटना, ये खाओ वो खाओ टाइम पे. उसको वो बारे में तो बचपन से उसको सोने का और अच्छे से टाइम पे खाने का, थोड़ा इतना ही खाओ मगर टाइम पे खाओ, अटर पटर बाहर का खाने का नहीं, कुछ नहीं. और बहुत जिद्दी थी. बहुत मेहनत किया उन्होंने, बहुत मेहनत किया मेरे साथ सर. उन्होंने बहुत मेहनत किया. और भाई लोग वो पढ़ी लिखी, इसलिए भाई लोग भी उसके साथ, दीदी इतना पढ़ी बोल के भाई लोग ने भी मेहनत किया. और मेरे को बहुत सपोर्ट है इसका, भाई लोग को भी सपोर्ट है. आज भी तो इतना सपोर्ट है कि सबका अपना केयर करती कि भाई ये खाओ वो खाओ, टाइम पे सो जाओ. वो सुनीता का तो जितना तारीफ करे उतना कम है. नहीं, बट सुनीता की तारीफ तो हम करेंगे, पर उससे ज्यादा तो आपकी तारीफ करनी है हमको, राइट? वो बोलते हैं ना कि ट्री और फ्रूट, अगर फ्रूट मीठा है तो ट्री ने भी तो कुछ, झाड़ ने भी तो, पेड़ ने भी तो कुछ अच्छा काम किया होगा. तो आपके इतने अच्छे जो फ्रूट्स है, योर किड्स, आपके बच्चे इतने अच्छे लायक है, तो क्रेडिट आपको जाता है. स्पेशली आई थिंक आई बिलीव कि मिस्टर माने का बहुत जल्दी, आई थिंक ही पास्ड अवे मच अर्लियर. तो आपके लिए इन सब को मतलब उस इतनी डिफिकल्टी, आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स. तो आपको याद है, आई नो संतोष
you probably were younger, आप थोड़े उस time आप young हो गए, but Suneeta, do you remember that time on how did you deal with that hard situation? यस, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि मतलब मैं 8 साल की थी, ये तो 4 साल का ही था। हमारे पापा ने बहुत पैम्पर करा, मतलब किया था हमें। मम्मी भी मतलब हाउसवाइफ थी, वो घर संभालती थी, कोई हमें एक्सपोजर नहीं था। और ऑल ऑफ अ सडन ही कुड नॉट बी विद अस, एंड हमें जो मतलब मैं बचपन से जो हम बोलते हैं कि पेरेंट्स सामने नहीं होना, मतलब मम्मी नहीं, पापा नहीं, और हम मेंटली भी ऐसा लगता था कि किससे बातें शेयर करें। हमारे टाइम पे मोबाइल फोन्स नहीं थे, वो तो अभी आए, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हमने मतलब बट मम्मी का हमेशा जितना भी टाइम वो स्पेंड करते थे, हमें ब्लेसिंग लगता था। हमें लगता था कि जो भी मम्मी की बातें है सुनना चाहिए, क्योंकि हम स्पेशल है, क्योंकि हमारी लाइफ औरों जैसे नहीं है। मैंने तो हमेशा ऐसे सोचा कि मेरी लाइफ स्पेशल है, और ये मुझे मौका दिया है कि मुझे कुछ करना है। और मैं जब मम्मी को इतनी मेहनत करते हुए देख रही हूँ, आई मीन और कौन हो सकता है, मतलब शी कुड हैव चोजन अनदर लाइफ, लाइक लेफ्ट अस, और कुछ भी हो सकता था। बट जो बोलते हैं ना, वुमेन चेंजेस वर्ल्ड अराउंड हर, so she has changed her world, our world, and now she is creating an impact, and everybody gets so inspired by her, by us, because it was the seed was rode somewhere. So yes, extraordinary life है। और हमने मतलब मम्मी नहीं थी तो मैं भाइयों का ख्याल रखती थी, उनको मारती पीटती थी कि पढ़ाई करो, लाइफ मतलब वो एक फन था। बट Sunita, before we go a little ahead, I know your brother is there and he's been laughing जब आपने इनको बोला कि, तो yes. tell me संतोष, इन्होंने आपके साथ कोच के जैसा बर्ताव किया या किसी बुली के जैसे बर्ताव किया? How was Sunita as a sister for you, and especially now when she's become Sunita, right? Perfect in terms of health, fitness, career, trekking, सब कुछ, beauty queen, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो अभी बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। जब स्टार्टिंग में मम्मी जैसे बोली कि ये स्टार्टिंग से बहुत हार्ड वर्किंग थी, हम इसको देखे यार ये कितनी हार्ड वर्किंग कर रही है। उतना हार्ड वर्किंग मैं नहीं था। आई यूज टू सबसे लास्ट वाला किड था, तो सबसे ज्यादा ये होता था कि इसको ये दो वो दो, इसको मारो मत। बट यहाँ उल्टा था, मार तो बहुत पड़ता था इनसे मार तो बहुत पड़ता था। खेलना सिर्फ था, ये था। उसके बाद फिर जैसे ही मेरा 9th-10th आ गया ना, तो दीदी का कॉलेज वगैरह हो गया था। तो उसको देख के मुझे भी पढ़ना चाहिए, वो अभी कुछ तो कर रही है, तो उसको कुछ तो जॉब वगैरह मिलेगा, तो मैं क्या करूँ। मैं यूज टू, वो इतना मुझे गाइडेंस देती थी कि ये करना वो करना। तो देन मैं 10th से मेरा जो चेंज हुआ, बहुत बहुत ही डिफरेंट लेवल पे चेंज हुआ। मैं पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देने लगा। तो उसने ये भी किया कि तुम जिस पढ़ाई मत करो, एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटीज करना है। तो मैंने ड्रामा में गया, तो मुझे वहां उसने बहुत सपोर्ट किया कि तुझा, घर से नहीं था परमिशन, बट उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि यू हैव टू गो ड्रामा करो। वो मैं आज सोचता हूँ ये मोटिवेट किया कि आज मेरा पूरा महाराष्ट्र में डार्लिंग करके मूवी आया था, तो उसमें एज अ मैं मेन कैरेक्टर था। कांग्रेचुलेशंस। तो वो मैं फ्लैशबैक में गया ना, तब भी दीदी का सपोर्ट नहीं होता, उतना मोटिवेशन नहीं होता, आज मैं पूरा महाराष्ट्र के थिएटर में ना होता। तभी वाला वो मोटिवेशन। इनफैक्ट फॉर एवरीबडी हियर, सारे गेस्ट को मेरे को ये बताना है कि सुनीता इज अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी and a lawyer, and she's working for a very big company in a very senior position. So she is the perfect example, like I said, hardworking, brainy, beautiful, as well as completely responsible. मतलब ये qualities बहुत rare है, but मुझे अभी एक चीज सबको दिखानी है। I was looking at this data, as you know, GOQii पे हमारे पास data बहुत important है, right? कि how is somebody performing, just like athlete या cricketer का हम देखते हैं कितने छक्के मारे, कितने चौके मारे, एवरेज क्या है, उसी तरह GOQii पे भी we have this entire data. So I am actually showing you Sunita's data, and it is very impressive. पहली बात तो वो 344 days, almost एक साल के लिए she is in elite category of GOQii's health. Elite category is the highest category of health on GOQii. एलिट बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। यू हैव टू बी हेल्दी,
you have to eat right, you have to be active, you have to sleep well, you have to do meditation, mental health. So you know सब कुछ करना पड़ता है, and you can see she is 71% aware of her health. Also, she is in the top 6% of all GOQii players. मतलब इतना इनका amazing performance है. दूसरा, आप अगर इनकी हेल्थ जर्नी भी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हेल्दी में थी. वो पहले फॉर एग्जांपल 2021 में वो थोड़े दिन एक्टिव भी थी, फिर वो फिट आई, फिर वापस एक्टिव हुए. दिस शोज यू कि ऐसा नहीं है कि उनके लिए इजी था. You know, active was a slightly low, as you can see. So she went from being active to fit, but something happened in the month of March. So 29th March के बाद ऑलमोस्ट एक साल पहले कुछ तो हुआ, एंड वी विल लाइक टू नो क्या हुआ, कि उसके बाद शी इज जस्ट बीन कंसिस्टेंटली ऑन इट. Also, if you look at her other data, her health has massively improved from 69 to 76. Her BMI is completely normal, and it was very different when she was having all those health issues. If you look at her activity, month on month she's doing over 200 kilometers of walking. She's average active time inka again is very high. She, of course, we can see she loves doing yoga, and we will ask about that. But agar aap inka data bhi dekhoge, basically everything happened from the lockdown 2020 to 2020 se lockdown ke time se she's really taken off. Active for 229 days, active for 282 days, active hours agar aap dekhoge. Also, if you see her sleep quality and her sleep score, it's excellent. Again, itna deep sleep, she's getting 31 deep REM sleep, light sleep. So again, if you look at her data, matlab ye sirf khali bolna ki yaar koi healthy hai, and then if you see the sleep, of course off late she's been sleeping, different thing, but I'm sure kuch to hoga ye raat ko late so rahi hai, but I'm sure she wakes up every day at 6 a.m. You can consistently see the average wake up time is 6 a.m. Also, if you see her food habits, I mean, it's just amazing. Ye sab data, I really that this is a data of a complete rock star. So first of all, Suneeta, congratulations. And मुझे बताओ कि वो हुआ क्या, लास्ट मार्च में कुछ तो हुआ होगा कि आपने सडनली गियर बदल के पूरा आप हेल्थ की जर्नी में सुपर फास्ट चलेगी. Thank you for showing the data. I'm very impressed with myself now. Yes, actually क्या हुआ जब 2020 में फर्स्ट जैसे लॉकडाउन हुआ, एंड मेरे बर्थडे पे ही हुआ था 24th March 2020, एंड आई वाज क्राइंग. आई वाज टेलिंग मॉम मेरी अभी गोकी पे लाइफ इतनी मस्त हो गई थी गोकी की वजह से, एंड आई स्टार्टेड ट्रेकिंग इन 2019 अगस्त, एंड अभी मैं मैराथन, मतलब फरवरी में मैं जस्ट फर्स्ट मैराथन 10 किलोमीटर करके आई थी, मतलब लाइफ का फर्स्ट मैराथन एंड 10 किलोमीटर, एंड माय कोच सेड दिस इज द एवरेज टाइम व्हिच नॉर्मल रनर runs. I was like so impressed with myself. अभी मैं बहुत ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर करूंगी, and this is giving me a different life. Like पहले प्रोफेशनल लाइफ हो गई, मतलब काम कर लिया बहुत ओवर डेकेड नाउ, अभी मुझे खुद पे भी थोड़ा टाइम देना है, और जो चीजें मैं करना चाहती थी लाइफ से, जो मैं बचपन में नहीं कर पाई या बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से नहीं कर पाई, तो शायद मैं वो करना चाहती हूँ. 2020 में it just started and lockdown, COVID, कहीं नहीं जा सकता, and I'm crying on my birthday कि मैं आइसक्रीम कट कर रही हूँ instead of केक. तो बहुत बुरा लगा, एंड फिर मैंने बोला नहीं, जब मेरी प्रायोरिटी मेरा हेल्थ एंड मेंटल फिटनेस है, और when I spoke to my GOQii coach, she said we'll find out ways to get active, getting fit and getting healthy. You don't worry. You meditate, you just sideline all these worries, will come out of it. And वो जो support है हमेशा का, मतलब एक expert से जो आता है, because when someone at that position who's always there, see, I have been using coaches since my day one with GOQii, so they are like my constant support. अगर मैंने कुछ indulge भी कर लिया, I was like, okay, I'll ask my GOQii coach, she'll definitely give me a remedy to get out of this guiltiness and all of that. So 1 year 2020 हम just adjust हो रहे थे, new working norms, we were
ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे थे, तो टेरेस पे ही मैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भी हमारे टारगेट सेट हुए थे वो कर रहे थे। बट फिर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लाइफ, मतलब घर में रहना, कहीं जाना नहीं, जैसा you know it's not safe outside, you can contact covid, but covid तो हुआ और covid से बहुत जल्दी भी बाहर आ गए। entire family was affected in August 2020, but we came out, we did not have any, मतलब मेरी मम्मी भी, उनको भी कोई सीवियर, उनको बीपी था, है इनफैक्ट उनको भी थायराइड है, बाद में पता चला। तो बट उनको भी कोविड ने, हमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो अच्छे हैबिट्स थे वो ऑलरेडी हमारे इनकलकेट हो गए थे। जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, वाटर इनटेक, जूस पीते हैं, जो हमारे जूस खुद मैडम बनाती। अरे वाह। तो खाने के बारे में सब खुद काट के देगी, सुबह बादाम ये सब भिगा के सबको बोलेगी ये भाई खाओ, उनका सब निकाल के देगी। डेली 4 बादाम होते हैं, एक एप्पल होता है, फिर संतरा वगैरह मेरे लिए। तो अभी वो मेरा भी हैबिट हो गया यार, दीदी कल क्या खाना है, कैसे So this month is very important month, and today is a very important day. As you know, women's, this March 8 को भी celebrate the women's month, women's day. And बहुत amazing है कि आपकी जो पूरी story है, of course मैं और संतोष तो इधर side actors हैं, हम लोग main actor नहीं है, पर आपके जितने भी hero हैं इस story के और heroine हैं are all women. So now what I want to do is I want to invite the 2 other most important women in your life, apart from your mother, वो तो है ही। तो I want to now invite your GOQii coach Yogita and your GOQii expert coach Geetika, who are both behind making sure your health is on track. So welcome Yogita and Geetika to the show. Yes, Yogita, we can see you. hello. Hi, Geetika, we can see you. Hi, Suneeta. Good evening. Hello. Good evening. Hi, Yogita ma'am. Good evening. आपकी Yogita, आवाज नहीं आ रही। You are on mute. Okay. Yeah. How about now? Yes. Yeah, we can. Yeah. Hello, Suneeta, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मुझे मैं पहली ठीक हूँ। बार आपसे फेस टू फेस करने का मौका मिला। So happy. I'm also very happy to see you, Suneeta. आप जिस पोजीशन पे हो आज और जिस वजह से आज आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है और इंटरव्यू हो रहा है, I'm really proud of you. इनफैक्ट ये अपॉर्चुनिटी, और आपने जो मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम आप ट्रेकिंग पे जाओ, आप ट्रेकिंग पे नहीं गए, मुझे याद है आप लास्ट मंथ ट्रेकिंग पे नहीं गए हो, ये सब याद दिलाना, ये सब आप बहुत अच्छे से करते हो। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन अ स्पेशल इंसिडेंट। जब कोविड हुआ था एंड पोस्ट कोविड में जब हम रिकवर हो रहे थे, तो मुझे अक्यूट ब्लोटिंग होता था, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सिटिंग ऑल थ्रू आउट द डे, और हमने बहुत कुछ ट्राई किया बट वो मतलब जा ही नहीं रहा था। तो मैंने मैम को मैसेज किया, मैम मुझे बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रहा है। मैम ने इमीडिएटली, दैट वाज नॉट आवर सेट कॉल, मतलब एट 9 o'clock और समथिंग इन द नाइट शी कॉल्ड मी, शी टोल्ड मी लाइक आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, आप ये खा लो, आपको बेटर लगेगा। मतलब मैं वो कभी भी नहीं भूल सकती, एंड इट मेड मी मतलब इट रिलीव्ड मी सो मच। So extraordinary लोग आप जैसे उसे बनते हैं मैम, आप extraordinary हो। I'm so happy to have you. Thanks a ton, Suneeta. But your efforts are commendable. मतलब nobody can beat it. You are unstoppable. And your push is always commendable. You do not let me. चलो ये कर लो, अच्छा ये नहीं हुआ है आपसे, ठीक है थोड़ा चल लो, थोड़ा सा कम खा लो, थोड़ा सा मेंटेन कर लो, अगर स्वीट खा रहे हो तो चाय विदाउट शुगर पी लेना। तो मतलब ऐसा आपने कभी भी नहीं बोला कि आपको ये गिव अप करना है या आपको ये नहीं करना है, मतलब ऐसे कोई बर्डन सब रहा ही नहीं है। अच्छा आप ये कर रहे हो, ठीक है आप फिर ये कर लेना। तो ये पॉजिटिव, और मैं बोल रही हूँ जैसे आई हैव अ फॉल बैक ऑप्शन। मुझे हाँ, I forgot to tell you all that from 2020 I'm not taking मतलब थायरोनॉम पिल। मैं विदाउट पिल मेरे थायराइड्स लेवल कंट्रोल कर रही हूँ। All thanks to GOQii coaches and this is thanks very to nice. your effort. Very In nice. fact, I want to add one thing कि योगिता के पुश से इन्होंने कोई छोटा मोटा ट्रैक नहीं किया है, ये तो बहुत आई थिंक सह्याद्री माउंटेन्स एंड पता नहीं कौन से माउंटेन्स में ट्रैक करके आई है। तो प्लीज सुनीता टेल अस अबाउट योर ट्रैकिंग जर्नी, वी ऑल वांट टू नो।
Yes, so as I said, when in 2018 my life got streamlined, my health rather responding well. So in 2019 I started going for a treks. मतलब मैंने छोटे छोटे ट्रैक्स से स्टार्ट किया था. तब जो मेरे योगिता मैम मेरे कोच नहीं थे, वो कोच ने मुझे एडवाइस किया था आप थोड़ा ग्रीनरी में जाओ, आप वीकेंड्स पे थोड़ा यू गो आउट एंड यू गो ऑन रोड्स फॉर फॉर अ चेंज. ऑफिस एनवायरनमेंट में होते हो, शायद आपको थोड़ा चेंज चाहिए. So I took that cue and I started trekking, थोड़ा hikes पे जाना. And कैसे होता है ना कि आपकी हेल्थ आपको रिस्पॉन्ड कर रही है अच्छे से, तो मैंने देखा कि यार मैं तो कर पा रही हूँ छोटे मोटे ट्रेक्स. तो आराम से लोग बोल रहे हैं अरे आर यू एक्सपर्ट, आप तो लगते ही नहीं हो कि फर्स्ट टाइमर ट्रेकर्स हो. तो वैसे क्योंकि मेरी मेंटल फिटनेस या फिजिकल फिटनेस अलाइन थी, तो आई कुड आई मीन मैंने बहुत सारे सह्याद्री ट्रैक्स किए, टेक्निकल ट्रैक्स किए जहाँ पे प्योरली रैपलिंग होता है पहाड़ों से 300 फीट डाउन रैपलिंग, क्लाइंबिंग होता है. और एंड माय स्पेशल ट्रैक वाज टू केदारकंठा इन उत्तराखंड इन December 2020. Wow. So, अगर आप like it will be very very cold. हाँ, so I'm coming to that. So मैं बचपन से ही मुझे ठंड का बहुत मतलब नॉर्मल हवा से भी मुझे एलर्जी थी कि नहीं मुझे बहुत ठंडी से आप और भी ज्यादा नहीं कर सकते, और ठंड में आप नहीं ज्यादा टाइम रुक सकते. और घर वाले भी मुझसे परेशान थे, उनको सबको गर्मी होती थी और मुझे ठंडी लगती थी. बट मैंने सोचा कि नहीं मुझे जाना है. माय कोच आई थिंक परवीन वाज माय कोच. आई थिंक आई डू नॉट नो इफ शी इज देयर स्टिल देयर. Parveen, she was my coach. So she prepared me for the trek like a month in advance. Like आप ठंड के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हो, मेरी मतलब क्लाइंबिंग के लिए, क्योंकि हिमालय इज अ डिफरेंट मतलब आइस में आपको चलना है. तो उसके लिए हमें अलग से मुझे उन्होंने मेंटली भी प्रिपेयर किया. ब्रीदिंग एक्सरसाइज की वहां पे आप इतने एल्टीट्यूड पे जाओगे तो यू वोंट बी एबल टू ब्रीथ. सो ये सारा हम पहले से कर रहे थे. एंड वी वर सो लकी कि वहां पे स्नो स्टॉर्म हुआ. एंड मम्मी बोल रही थी मेरी बच्ची वापस आएगी नहीं आएगी, इतनी ठंड में वो सिकुड़ गई होगी. बट मुझे सर्दी भी नहीं हुई, और स्नो स्टॉर्म मैंने स्नो में इतना एंजॉय किया है. एंड पहली बार मैं देहरादून से उत्तरकाशी सांकरी ऐसे मतलब नॉर्थ में भी पहली बार जा पाई. एंड I want to ask, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है मिसेस माने को. मैम आपको क्या लग रहा था कोई पागल तो नहीं हो गए, कोई भी इसको मैसेज करके बोल रहा है यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ और ये जा रही है, क्योंकि आपको तो पता नहीं वो तो बोल चुके हैं कि क्या कर उठ के ट्रैक पे जा रही है. कोई मैसेज पे कुछ आपको लिख के दे रहा है और सडनली ये सीधा हिमालय में चली गई, ये क्या हो रहा है? नहीं, बहुत ही स्ट्रांग बन गई वो. पहले थी मगर आप भी तो बहुत ही स्ट्रांग बन गए. अभी उसको ऊपर उसमें मून पे जाए. मून पे दोनों मून के लिए भी ट्रेनिंग कर सकते हैं. हमारे पास वी हैव आवर एक्सपर्ट कोच गीतिका हियर. गीतिका हियर वी हैव अ प्लेयर जो पहले की शुरुआत हुई विद हेल्थ इश्यूज, थायराइड, पीसीओएस, मतलब दुनिया भर के हेल्थ इश्यूज, एंड नाउ शी इज सेइंग शी वांट्स टू गो टू द मून. टेल अस कि आपने कैसे किया. आई डोंट नो if you are aware, Suneeta, we have experts working very closely with our coaches. तो ये एक पूरी टीम है. गोकी का जो सिस्टम है, एज अ फुल इकोसिस्टम who is helping you. सिर्फ एक नहीं, पूरी टीम है. And one of the most important part is expert coaches, and I'm happy to have Geetika here. So Geetika, ये हो क्या रहा है अभी? हमको मून के लिए भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. बिल्कुल, और हम देंगे सुनीता. We are really ready, and I'm so glad I heard your goal now. I'm going to get you prepared. In fact, Yogita is a wonderful person to to be with you. So Yogita ने पहले भी बहुत लोगों को मून पे भेजा हुआ है. yes. गीतिका मैम के मुझे फेस टू फेस इंटरेक्शन में पहली बार ही कर रही हूँ, बट गीतिका मैम के मुझे हर बार मेल आते हैं कि ये स्पेशल हो रहा है, आप कैसे फील कर रहे हो. फिर मुझे मतलब अच्छा लगता है कि मतलब इतनी एक्सपर्ट्स हमारे लिए वर्क कर रहे हैं. तो आई ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड कि नहीं हम मतलब ऑफकोर्स मैंने कभी भी जो अभी अचीव किया है लास्ट 2 सालों में, मैंने हमेशा, आप रिव्यू अगर पढ़ोगे तो मैंने हमेशा कहा है कि
अगर गोकी नहीं होता तो शायद जैसे मुझे ये पता नहीं कहना चाहिए, बट मैं जहाँ देखती हूँ ना, तो हमारे यहाँ पे हम हेल्थ पे या अभी कोविड के बाद में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई है, बट उसके पहले मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने अवेयर नहीं है। हम कुछ भी जंक खा लेते हैं, हम मतलब हेल्थ इज वेल्थ, ये फंडे को हम ये इम्बाइब ही नहीं कर पा रहे। तो और कोविड में भी हमने नियर एंड डियर वंस को बहुत अर्ली एज में भी देखा है। तो हम यही बोल रहे थे 2020 में, हमारा गोल था कि सरवाइव करना, और हम अच्छे से सरवाइव हो पाए। मतलब we are very few blessed people that we could recover from COVID, because my brother, he was on the field all the time because he's a network engineer. We were we couldn't completely lock ourselves because he had to go to office every day. He in fact got COVID twice or thrice, but with lot of, I remember there was a kada which Gitika ma'am had prescribed कि ये काढ़ा पी लो, तो जैसे ही सर्दी हो जाता था, we used to have that kada. Everyone, in fact, we told our friends to have that. It helps to cure your मतलब cold very fast. It's all natural ingredients. We have alternative methods. So ये सब जो है गोकी का the entire ecosystem है. Like जैसे मैंने आपको मेंशन नहीं किया, दिव्या मैम, तो अगर आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ सभी अच्छी है, बट क्या होता है ना, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच इम्पैक्ट्स यू ऑन डे टू डे बेसिस, लाइक ऑफिस में कुछ नहीं हो पाया या आउट ऑफ कंट्रोल हो गया या कुछ, तो स्ट्रेस आ जाता है कि ये हम कैसे कर पाए अभी। तो दिव्या मैम के मैं वीडियोस देखती हूँ, शी गिव्स यू, मतलब वो बुक्स में से या उनकी जो टिप्स होती है, द वे शी प्रेजेंट्स की क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, गोल्स अचीव करने के लिए वो जो टिप्स बताते हैं। अर्जेंट कॉल आया हुआ है, एक मिनट, मेरे को बहुत अर्जेंट कॉल है। यस यस, या प्लीज प्लीज, थैंक यू। मेरे को जो अभी अभी कॉल आया था, पता है किसका कॉल था? द कॉल वाज, let me actually get her, the person who just called me live. So I want to now welcome Divya Thampi on the show. Wow. Divya. Hello ma'am. Hi Suneeta. ये आपके बारे में इतनी तारीफ कर रही थी, मैंने बोला आपको तो लाना ही पड़ेगा, तो उसी टाइम आपका कॉल भी आ गया, तो we have got you in. So here we have the unstoppable Suneeta who wants to go to the moon, who started with everything, and she's saying कि आपकी books and talks ने इन पे ये जादू कर दिया है। तो tell us ये हो क्या रहा है? Wow, Suneeta, I am truly very inspired by what I've been listening to all this while. आपने जिस तरीके से अपने हेल्थ पर फोकस किया, जिस तरीके से एक वो होता है कि आप उस जर्नी पे शुरू कर लो, जो कि काफी लोग कर लेते हैं, लेकिन उस पर परसिस्ट करो, मतलब 2 साल के लिए कंटिन्यूअसली उसी लेवल पर करते रहो, ये एक अलग ही बात है। और अपना लेवलिंग अप like GOQii says. So that's really amazing. So many congratulations, and I'm so inspired to see your journey. Thank you so much. I'm so happy to see you. Tell us कि ये मतलब what we have seen right now, why is suddenly there are so many people who are getting interested about, I want to get my health back on track. Yeah. ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, what is happening right now? I think this is something which has been became quite obvious to people within a few months of this COVID thing starting off in March 2020, was the fact that there were a lot of things that we took for granted, and also I think took for granted in terms of being able to go out, being able to socialize, and that social support is such an important part of our mental well-being. And then when that was cut off, and automatically everything was cut off in terms of any interaction, the things like going out to eat something or just going out for a walk. So I think physical, more than physical ailments, it is the mental stress that takes a toll on people. If you can, I think what Suneeta said quite correctly is, if you can handle your mind, you can handle anything else. What happens to you physically is largely a manifestation of what is going on in your mind. So if you can strengthen your mind, then your body automatically gets strengthened. I think Suneeta and family are a great example of that happening. And when they say unstoppable, इसका ये मतलब नहीं कि इनको रोक लिया किसी ने physically. Her mind is unstoppable, right? That's what it is.
And Suneeta, I know you are back now, so please tell us exactly what was your experience listening to Divya? Yes, so as I was telling कि जब हम ऑफिस की छोटी छोटी बातों पे कुछ किसी ने हमें बोल दिया, कुछ हमसे नहीं हो पाया, या कभी कभी जैसे कोविड हुआ तो आपके सारे गोल्स मतलब टुक अ स्टैंड स्टिल, मतलब आप एक ब्रेक लग जाता है, तो वो ब्रेक मतलब हमारे वजह से नहीं है, कुछ आउटसाइड फैक्टर्स है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट तो ऐसी चीजों में या नॉर्मल सा कोई मतलब जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स में मैम ने एक सेशन दिया था कि हाउ यू कैन स्टे अवे फ्रॉम द ऑफिस पॉलिटिक्स, या टॉक्सिक एनवायरनमेंट वर्क में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, when you should switch jobs, what you should look for a while you are choosing to switch a job. तो ऐसे मैम छोटे छोटे टॉपिक्स पे भी इतने सारे मतलब काफी टाइम ये मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद मैं वो ज्ञान जैसे आपको मम्मी बताएगी, मैं काफी फ्रेंड्स में या फैमिली को ये सब बताती रहती हूँ कि आप बहुत सारी चीजें आप एक्सपर्ट्स का यूज कर सकते हैं। योगिता, मुझे एक बात बताइए कि आपके पास जो दूसरे प्लेयर्स हैं, राइट, डू दे हैव प्लान्स एंड एम्बिशंस लाइक सुनीता? व्हाट इज यूनिक अबाउट हर? आपको इनके बारे में यूनिक क्या उनको स्पेशली बोला डिफरेंटली देन योर अदर प्लेयर्स फॉर हर टू नाउ ट्राई टू एम फॉर द मून? So definitely, I have a very different era of players, और सबके ambitions है, everybody is looking after for something, और सब अपना अपना काम कर रहे हैं, but as for Suneeta is very different. जो बोला है, she will do it no matter what, and she does it so मतलब she gives her 100% to that, और she does not take things too lightly, और she always has something in her mind कि अच्छा अभी ये कंटेस्ट हो गया, अभी नेक्स्ट क्या करना है, अभी फिर नेक्स्ट क्या करेंगे. So she always has some plan going on, and very beautiful thing about her is that she takes all the opportunities come along her way, like the pageants which she won. So मतलब one day she came to me and said कि मैम ये एक है और I'm going to participate in this, and I was like wow, मतलब she is so self motivated कि उनको ज्यादा पुश करने की जरूरत ही नहीं है. And she was competing against 18 years old, 23 years old, so look at her confidence. She had that कि नहीं, I can compete with that young generation. So this is I really like about her. No, I think it's amazing, and what you just said, right, कि जो इनकी mental strength है और never say die attitude is what has changed the whole thing. And I know Divya has spoken a lot about the growth mindset and a positive mindset, and a lot of people think ये मुझसे नहीं हो पाएगा, confidence issues and all of that, right? So what is your advice to people who have these kind of issues? Because of course, in the case of Suneeta, she's extraordinary, she's unstoppable. Yeah. But what can others learn from Suneeta? So again, not many things to learn. One failure is not the end of the life. So that is the biggest thing to learn from her, or in general from life also. ठीक है, एक बारी fail हुए, it's okay. But again, you need to pick up and start with, अगर बड़ी चीजें नहीं होती, start with baby steps. So I have people with me जिनसे बड़ी बड़ी चीजें नहीं हो रही. I said it's okay. We will go back and start with the small things, and small things works. So this is the takeaway. It's not always the big changes जो होते हैं that changes your life. Small things with due course of time give a huge impact. Compound, right? So Divya, what is your? I know you gave a whole talk around small changes and the power of compounding, which everybody is saying. So do you think that has really helped Suneeta? Totally. And I think you also spoke about the growth mindset. So growth mindset is this idea where you believe that you can improve your capabilities, you can change your personality traits, you can change your intelligence level with practice. So while fixed mindset is this idea that I have this much amount of intelligence, I have a definite amount of personality type, and I have a definite amount of capabilities, which then prevents you from trying things. And when you try things with a fixed mindset, you are expecting immediate results. And if you don't get immediate results, you're like, this is not my cup. I'm not that kind of person.
Yeah. So I think Suneeta has been consistently using that growth mindset. If something did not work, it doesn't mean I have failed. It just means that I need to change my strategy. And I think being part of this ecosystem with Yogita, Geetika, and the entire GOQii platform, where she is able to track her progress. That's such an important thing, being able to track your progress, having somebody to support you through those difficult times. These are very important factors. And I think she's one of those people who is really leveraged those things. Tell us that, amongst, you now possibly have so many players and expert and coaches under you. What is the X factor? What has Suneeta में exactly hai kya? Why are not more people able to do this? Because बाकी सब जगह तो हमने excuses, right? We can write a book on why people can give excuses, right? Here, forget about excuse. There is absolutely no excuse for anything. What is she doing? There is a theory in psychology, even Divya would agree, which is self-determination theory. She's so self-determined, right? And she needs guidance, right? So there is self-determination and there is an external motivation from Yogita. And she takes a lot of motivation from the entire ecosystem. She follows Divya. She told me herself, she follows everyone. And so that is there, that self-determination that never, I'm not going to fail. This is what I can do, I will do. So there is that power in her, willpower that we can say, which has helped her move beyond and achieving every target. In fact, every single coach shared her story with me. She has worked with 3 coaches so far, and every single coach came up and told me, ma'am, speak to her. Yes, so I think the one word, description to her is willpower. She has a strong willpower and she got right guidance to use the willpower in the right direction. So having a goal like, I want to go to moon. Now, this is not really an easy goal, or every single girl, might come up and say, hey, I want to go to moon. So she has this vision for herself. But Suneeta, we were just talking to Divya, who was telling us कि आप जो कर रही हैं उसको कहते हैं growth mindset. So Yes, tell us how is Divya helped you develop this amazing growth mindset? Yes, so as I said, when I go for a morning walks, I listen to her videos. There's one video, growth mindset. So I've heard that. So she says that, it's a Pomodoro technique. She had told us how, I set goals, I achieve them. And even if I'm not able to achieve my goals, I find alternative goals. And, you have to set time. You do not have to, how to use mobile phones, when to use, how it affects the attention span she talks about. So there are so many things that I've learned from her videos and from her. So all that has really helped me build my positive mindset. And, even if there are, there are things which are not going as per that, how to come back and, get a fresh start. So all that is your mind game and your mind work. And if you have such ideas or such cues, so you can switch back and it gives you that adrenaline. Okay, chalo nahi hua, theek hai, ye to kar sakte hai, ye nahi hua, chalo ye to try kar sakte hai. So I think हमारा life ऐसा ही होता है, कुछ set जो है वो नहीं हुआ. Because see, my mom has been the biggest inspiration. उनके पास तो कुछ भी नहीं था, तो हम फ्रॉम स्क्रैच से हम इतना बड़ा सब कुछ अचीव कर सकते हैं. तो 24 hours में हम उसको कैसे how we can productively live that 24 hours, exercise, you compartmentalize, as she says. I remember she'll get it. Compartmentalize the time, the energy, be with your family. That's what she keeps talking. And she also talks about how you should give time to yourself. That re-energizes you to, give your best every day. She'll agree with me. Yeah, what I'm amazed about is the fact that a lot of things that I said I don't necessarily remember, because but the fact that you not only listen, you said you listen to the videos when you go for a walk. So what I see about her is this whole approach of being a lifelong learner.
I mean, a lot of us listen to things once in a while, read things once in a while, sounds interesting, and we forget about it. But she's one of those people who will read, learn, hear, learn, apply. Yes. So, and I think that's a big difference, because we hear fancy things, it sounds very interesting, थोड़ा try करेंगे, छोड़ देंगे. पर आपने जो मतलब बार बार ये नहीं हो सकता तो अब मैं क्या करूं, तो चलो वीडियो सुन लो, and then take the next action, और कोच से बात कर लो and take the next action. So I think that's fulfilling to see Suneeta, right? This is exactly what GOQii का जो पूरा purpose था, कि help people with physical, nutrition, mental, and even help people become the force of good, हम लोग बोलते हैं, right? And in the case of Suneeta, I want everybody to know that she's not only made an impact for herself and her family, but she's also involved in a lot of social activities. She's doing a lot under her NGO. She has a small organization under which she's doing a lot of things. And this is again inspired by her mother. It's called Padmini. It's an interesting word that she has put together. Padmini Foundation. Padmini, my mom's name. No, but the reason I want to call it Padmini is because of the Padman movie. Padman movie जो था तो ये Padmini हो गया, but ये हमारी Padmini है. So Padmini Foundation and Padmini is because it is again to do with women's health. It's got to do with women's hygiene. And वो बोलते हैं हमारे पैडमैन है, और नेक्स्ट मूवी अगर अक्षय कुमार बनाना चाहेंगे तो पैडमैनी will be the next movie. So please tell us about your social initiatives. I would like my mom to talk for her social work के लिए. ते सांगतात हिंदी मध्ये सोशल वर्क जे आपण करतो ते. आम्हाला मराठी पण येते, पण ये मराठी प्रोग्राम नाही आहे. नाही आहे म्हणून बोल. हो, पद्मिनी फाउंडेशन कशाबद्दल मला विचारले. हो, तू सांग ना, तू सांगशील तर छान वाटेल. कुछ नहीं, ऐसा ही लेडीज के लिए. वो पहले का जमाना अलग था, अभी का जमाना अलग है. अभी वो सब बीमारी ये वो सब निकली है, तो अभी सब सोच सुविधा निकली है, तो उनका उपयोग करना चाहिए ना. और किसी किसी को पता नहीं, गरीब लोग है, हर चीज झोपड़पट्टी में इसमें, तो किसको पता नहीं. तो मेरे बच्चे आगे उसको लेके जा रहे, उनको समझा रहे ये चीज करेंगे तो ऐसा होता है, ये सब अपने लिए अच्छे है. सब पहले जैसा नहीं रहे, अभी बीमारी अलग अलग निकली है, तो ये सब अच्छे, ये बच्चे जाके समझाते सब करते हैं. ये दोनों भाई बहन का बहुत है, करते हैं. मेरा है थोड़ा सपोर्ट. मैं बताता हूँ एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग. सो मेरा और दीदी का इनिशिएटिव था कि हम लोग करते थे, हेल्प करते थे. हमारे बर्थडे पार्टीज ना हम तो कोई अनाथ आश्रम में जाके करते थे, कि वो पार्टी में खर्चा, दोस्तों के साथ खर्चा एक दिन करने से अच्छा वी गो, मतलब वो बच्चों के साथ किया जाए. तो वो हम करते थे, 3-4 साल कर रहे थे. कुछ और चीजें हमारे सामने आई, स्लम एरिया में जब हम लोग विजिट किए तो हमारा काम रजिस्टर नहीं हो रहा था कहाँ तो हम वी थॉट कि चलो यार हम लोग एक एनजीओ निकालते छोटा सा हमारे लिए, वह हम लोग फंडिंग करेंगे, हम कुछ तो करेंगे. सो मुझे मालूम है क्योंकि मेरे यहाँ मम्मी थी, मेरा इंस्पिरेशन मेरी दीदी थी बाद में. सो वुमेन्स के लिए मुझे कुछ करना था एज अ मैन. हम लोग थोड़ा हमारे लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, बट नॉट लाइक दैट कि अब मेरे घर पे थोड़ा मेरा ये साइड बहुत स्ट्रांग था. तो हमने इनिशिएटिव लिया, दीदी से बात किया, चलो हम लोग करते कुछ सैनिटरी नैपकिन जो अभी स्लम एरियाज में वो लोग कपड़ा यूज करते. तो हमको वहाँ इनको कैसे हम लोग जाके इनको नॉलेज दे, ना कि उनको ये कि हम परचेस करके आपको दे दे, आप हमारा यूज करो, कोई ब्रांडिंग नहीं, हम उसको नॉलेज दे. तो दीदी इज अ फ्रंट पे थी कि उसको, क्योंकि उसको ज्यादा मालूम था उसके बारे में. सो उसको हम लेके जाते थे कि स्लम्स एरिया अभी भी लेके जाते कि एक्सप्लेन करने बोलते कि यूज क्या है, पैड से आपको क्या होगा. जैसे अपना एनवायरनमेंट भी जो है, जो वेस्टेज होता है तो उससे भी हमारा एनवायरनमेंट लॉस होता है, बहुत चीजें होती है. तो वो सब हमने फिर स्टार्ट किया. तो हमने बहुत सारे, नवी मुंबई में ऑलमोस्ट हमने ऑल स्लम एरिया कवर कर लिया है ये वाले चीजों से. एंड देन मोस्टली फोकस करें एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन. तो स्लम एरिया में जाके एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंट है. हम लोग है जो 10 बाय 10 के खोली में रहते थे, अब इंडिविजुअली हमारा 10 बाय 10 का बेडरूम है.
तो वो यहाँ से आप वहां कैसे जा सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तुम आप अच्छा एजुकेशन करो, देन यू विल गेट एवरीथिंग। मतलब आपको जो करना है, जस्ट गेट एजुकेशन एंड स्टार्ट योर मतलब हार्ड वर्क करो बस। It's the only. I think hats off to you and your family. I think this entire family is unstoppable, right? Not just one Yes. person. I think every family member ने इतना बड़ा किया, you know. And मेरे को यही आपके लिए एक सवाल था, सुनीता, that आपने GOQii का हर सिस्टम यूज किया है. So what has been your, you know, we build GOQii, हमने जो जो किया है, you know, GOQii Arena है, GOQii Store है, GOQii Coaching है, GOQii Karma Points है. And in fact, what we will also like to do is we will like to list the Padmani Foundation. We will like to promote this also separately. Wow. हमारी टीम इसको GOQii के ऐप पे भी हम लोग इसको लिस्ट करेंगे ताकि और GOQii प्लेयर्स को इसके बारे में पता चले. And we will also figure out a way to contribute to the foundation. I think आप जो कर रही हैं ये इतना अच्छा काम है. हम सब लोग मिलके आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी मम्मी को और प्राउड करेंगे. Thank you so much. Thank you so much. So tell us कि GOQii के और आपने क्या क्या पार्ट्स को यूज किया है? हाँ, तो मैंने काफी फीचर्स, मतलब ऑलमोस्ट सारा ऐप में दिन में, जो जैसे लोग इंस्टाग्राम पे जाते हैं या फेसबुक पे जाते हैं, मैं GOQii पे जाती हूँ. अरे मेरे GOQii पे ही अपडेट कर रहेगा, मैम पूछेंगे आज क्या खाया है. तो GOQii इज लाइक वो मेरा सोशल नेटवर्किंग है. वहां पे फ्रेंड्स मिलते हैं आपको लाइक माइंडेड. सो आपको पता होगा पहले हम संडे यू नो एक गेट टुगेदर होता था, वॉक्स होते थे, संडे वॉक्स. अभी कोविड की वजह से वो बंद हो गया है. तो बहुत सारे फीचर्स है GOQii के. GOQii स्टोर से बहुत सारी चीजें आती रहती है. घर पे मम्मी बोलती है अभी ये बस स्टोर तुम तो GOQii खरीद लिया क्या तुमने? मैं नहीं नहीं, कोई स्टेक नहीं मिला है अभी. तो लोग को गिफ्ट GOQii देती हूँ. देखो क्या पूछ रहे हैं वो. सब जिसको भी बर्थडे में गिफ्ट हमारे घर से GOQii जाती. GOQii ट्रैकर ही मिलता है. वो देख के समझाना पड़ता है उनको, 1-2 घंटा निकाल के सब समझाना पड़ता है. ये डॉक्टर आपको मिलेगी, ये करेगी, वो सब. मतलब फ्री में मार्केटिंग भी कर रही हूँ मैं. नहीं बट हाँ, इनिशियली मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल मतलब रिकॉर्ड्स के लिए या मतलब वो एप्स आते हैं. तो आई यूज्ड टू वरी कि हमारा GOQii सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है विमेन हेल्थ के लिए. व्हाई देयर इज नो यू नो पीरियड ट्रैकर? So I used to always put in feedback. There is no period tracker. There is no period tracker. We would like to, and it is launched. I think this year, last year, 2020, when it was launched, I was so happy. I told Yogita ma'am, I had told them. I used to write it in my reviews. I used to tell it over phone, the GOQii review calls whenever I get it. So please ये आप करवा लो. मुझे दूसरे ऐप पे नहीं जाना है. मुझे सिर्फ एक ऐप पे सब चीजें चाहिए. तो वो आ गया. I'm really you know grateful and thankful कि आपने वो feature, you got it installed in GOQii app. So thank you. Women's health is the entire theme for GOQii going forward. बोलते हैं ना, if you make one woman healthy, she will make the entire society healthy. Like आप देखा, आप जो कर रही हैं वो impact एक या दो नहीं पर पूरे आपके सोसाइटी को जा रहा है, पूरे नवी मुंबई को जा रहा है, and hopefully पूरे इंडिया को जा रहा है after this talk. I think that is the impact which you have created, and it is so amazing to see the woman power here, right? Again, मैं और संतोष तो खाली side actors हैं, but the main, the super heroines and the power are truly all here. It's so amazing to see all the strength of GOQii all together एक साथ. Yeah. And that is what is the power of the GOQii platform, that ये सारे लोग बिना एक दूसरे को मिले physically, they are working so connectedly. Let me tell you, मैं GOQii कोविड आने के बाद लोग ज्यादा डिजिटलाइज हो गए, कोचेस को ऑनलाइन मिलने लगे. आई वॉज यूजिंग कोचेस इवन बिफोर दैट. फ्रॉम 2018 हम मतलब ऑलरेडी आई वॉज एक्स्टम और अडॉप्ट हो गई थी वो सिस्टम में. कोविड में मुझे ज्यादा हेल्प हुआ है. सो एंड मतलब इनका जो सिस्टम है वो पहले से हमें ऐसे कोचेस से मिलाता है जो हमें मिलते नहीं है बट हमारी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं. तो आई थिंक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, फ्यूचर थॉट कॉन्सेप्ट है आपका. एंड इट रियली हेल्प्स अ पर्सन हु यू नो वांट्स टू चेंज हिज और हर लाइफ. यू नो जैसे हम बोलते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ हेल्थ इज प्रायोरिटी.
हेल्थ है, हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ अगर आपकी इन चेक है तो आप कुछ भी अचीव कर लोगे। तो ये सेम है, आपकी हेल्थ को मतलब चेक में लाने का काम करते हैं। एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो थैंक हीना मैम, रौनक sir, and there are so many other coaches like Luke sir, sometimes his meditation, all the meditations, there's अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, but there are so many coaches। जब भी मुझे ऐसे कुछ नॉलेज चाहिए या कुछ किसी चीजों पर मतलब हम कैसे सोच सकते हैं, या किसी फ्रेंड ने मुझे इशू बताया है तो मैं उसको कैसे हेल्प कर सकती हूँ, सो आई फर्स्ट डू स्टडी। मतलब स्टडी, आप गूगल पे जाओगे बट गूगल इज, सब बोलते हैं गूगल डॉक्टर मत बनो, गूगल डॉक्टर मत बनो, तो मैं उनको बताती हूँ ये हमारे पहचान वाले डॉक्टर्स है जो बताते हैं, वो काफी मतलब ये सिर्फ आपको ऐसे नहीं बता रहे, आपका नॉलेज बढ़ा रहे हैं आपका उस एरिया में। So tell me, what has been the reaction of your relatives, friends, office colleagues? Kia suddenly, at one time you were, suffering with thyroid, you had all these problems of health, and now you are becoming beauty pageant queen. You are starting NGO, and you are becoming such a completely charismatic woman. तो लोगों का क्या reaction है? ये सब गोकी का कमाल है, ये सब फॉलो करते, सब जूस पीते। हम लोग कोई भी पूछेंगे ना शरीर का क्या राज है, तो मेरा गोकी है। हम लोग सब फॉलो करते। और मेरी मम्मी, हम लोग सब जूस पीते रोज रोज। सब ये प्लेयर उसका ही, गोकी का ही प्लेयर है। और सबको वही पहले सब पूछते हैं इनको। मुझे एक्चुअली बोलते हैं कि पहले यू मस्ट बी 25 और 26, मतलब हमने इतना सोचा नहीं आपके एज का राज क्या। आई हैव टू टेल देम नहीं, आई हैव क्रॉस, आई एम 34, and they're like, no, you are lying. And why would I lie? I mean, women do not like to reveal their ages, but I'm here, I'm revealing it because you will not believe it. So they are in awe of my journey. They're like, you have become all of a sudden inspiration. People keep messaging me, you are an inspiration for us, what do you do for your health, and how come you are reaching so many peaks, और आप ऑफिस में भी अच्छा कर रहे हो, हर जगह पे मतलब आपको इंस्पिरेशन और जर्नी कहाँ से मिल रही है। सो मैंने हमेशा कहा है कि गोकी is the best platform that you will find all answers to all your problems. You go there, you start using it, and it is required. I think it is need of an hour. Like आप जैसे मैं हमेशा I will reiterate it that health and mental health in today's world will take you to another level. It will always level up your health journey. See, once your health in check, मतलब जब भी मैं गोल सेट कर रही हूँ, मैं फर्स्ट अपने हेल्थ गोल सेट कर लेती हूँ, क्योंकि हेल्थ गोल सेट है तो फिर मैं आगे, मेरे फाइनेंशियल गोल्स है, मेरे वर्क गोल्स है, करियर गोल्स है, बाकी रिलेशनशिप गोल्स है, वो सबका जो आधार होता है ना, वो हेल्थ गोल से आता है। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो बाकी सारे गोल्स आपके ऐसे ही अचीव हो जाएंगे। तो मेरे को एक सवाल था आपसे। मुझे पता है आप, योर मॉम को सब पता है आप क्या खाती है क्या पीती है, बट हमको लगता है कि ये पूरा सही नहीं है, क्योंकि हम लोग एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं। वी आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन टू योगिता द कोच एंड योर मदर कि क्या, और इसका देखते हैं राइट आंसर कौन देता है। आपको पता है ना राइट आंसर क्या है। ओके, तो योगिता, यू हैव टू स्टार्ट बाय टेलिंग अस कि इनका सबसे फेवरेट स्वीट क्या है। स्वीट में इनको सबसे ज्यादा फेवरेट क्या है, और आप भी आंसर दे सकते हैं। देन वील सी राइट आंसर क्या है। Sweet में सर, I guess ice cream she likes. आइसक्रीम, अच्छा, लेट्स सी व्हाट मिसेस माने हैव टू से। इनका सबसे स्वीट क्या अच्छा लगता है? काय खाते उसका ते हे काय असते असं केकचं ते ब्राउनी। ब्राउनी। हाँ, ब्राउनी, व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ, यस, ब्राउनी। अरे ब्राउनी, ओके, 1 point goes to you. सेकंड क्वेश्चन, इनका सबसे फेवरेट फ्रूट कौन सा है? Fruit. I don't know, probably mango. I'm not very sure. मिसेस माने, इनका फेवरेट फ्रूट कौन सा अच्छा आवडतो यांना? यांना एप्पल। एप्पल. Is that the right Actually, I like all fruits. Like I'm a fruit crazy person. अब फ्रूट प्लेटर्स दे दो मुझे, मैं खत्म कर दूंगी।
और इनको भी मैंने आदतें लगाई है, फ्रूट्स खाना है बस। हम दोनों तो रोज जूस पीते, ये मैडम पहले उठने से जूस का तैयारी कर लेते। अच्छा, ये जूस के बारे में जो बोल रहे हैं बहुत टाइम से, मैं बताती हूँ। जब कोविड हुआ था 2020 में, तो रिकवरी में तब मेरी कोच थे, परवीन मैम थे तब मेरे कोच। तो उन्होंने मुझे एक रेड जूस का रेसिपी बताया था, जिसमें आप बीट, कैरेट, एप्पल, पोमोग्रेनेट, जो भी रेड चीजें हैं, ये सब आप उसको मिक्स करो। फाइबर जूस, बिकॉज हाइपोथायराइड में योर बॉडी स्लोज डाउन, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होते हैं। सो वो जूस मैंने तब स्टार्ट किया था, वो आज तक है। एंड इट्स द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दैट आई प्रिपेयर इट। मतलब मम्मी भी पी लेती है वो जूस। सो मम्मी इज लाइक इट, मतलब आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। एक्ने क्योर हो गया, आपके बाल लस्ट्रस हो गए, यू फील गुड इन योर टमी। सो दैट जूस शीज की, मतलब कुछ भी हो जाए, बट वो ये लड़की जूस तो बना के मुझे पिला के ही रहेगी। So she is like, and So योगिता, इनका फेवरेट डिनर क्या है? सर डिनर तो आजकल इनका जो है, सो इट इज मोस्ट लाइक फाइबर्स एंड सम प्रोटीन। मतलब डिनर करते नहीं है ये कुछ भी क्या? सर वो एक्चुअली वो हमारे गोल्स उस हिसाब से चल रहे थे। शी हैड टू compete to the pageant and all. So फिर पहले वर्कआउट कर आओ, then she has to have a whey protein, then some fibers and some proteins in her diet. So accordingly, चलो सिंपल कहते हैं, इनका फेवरेट स्नैक क्या है? snack with us, sir, she loves to have anything natural. Sometimes she has makhana, sometimes she has fruits. So fruits is her all-time favorite. स्नैक्स में फेवरेट क्या है इनका? आई डब्बे की थी क्या? Okay, so she'll tell you how many tiffins I carry. She will be the person. She's like, इतना पूरा संसार लेके जाते हो तुम ऑफिस? कितना टिफिन है? इनको जवारी का रोटी, दाल, फिर ऊपर से वो अंगूर कुछ ऐसा, फिर बहुत सारा रहता है इनकी इसमें, दालिम, ये सब कितने टिफिन घेऊन जाते हैं? 5-6 टिफिन आराम से बैग में नहीं आता है तो घुसा देती। एक्चुअली योगिता मैम ने स्ट्रिक्टली बोला है कि हम कुछ भी बाहर का नहीं खाएंगे। अगर हमारे पास, अगर वी हैव स्टोर्ड प्रॉपर्ली, तो हमें बाहर की चीजें खाने की जरूरत नहीं। सब कुछ अपने बैग में निकालो, टाइम पे खा लो। वाओ, no, I think it's such a, ये मेरे पूरा टीम वर्क हो रहा है। ये एक, there is no one person, right? There's an entire team supporting you to do this. Yes. I can go on and on with you, and I think we have to, Suneeta, first of all, invite you to also meet our team here in our office. But उससे पहले कि हम इस शो को एंड करें, I want to hear some final words from our experts here and our coaches, and see how Suneeta's story can inspire the whole generation. I think women, we know, are going through so many challenges, especially post-COVID world, family, their, overall, right? Women, we have seen the data. So what can we do? How can we learn from Suneeta? And what are your final thoughts on this? Let's start with Divya first. Thank you, Vishal. So I think, there is a saying, it goes that people fail, systems work, right? And I think what Suneeta has done very beautifully is she has set up this system. She's used GOQii to set up this system so that she doesn't have to use too much of willpower. Because as humans, willpower एक हद तक ही होता है, वो मसल हम बार बार इस्तेमाल करेंगे तो वो use up हो जाएगा. So she is very smartly set up the entire system, making sure that she reaches back to the coaches, uses every aspect of like she said that, I don't use social media, I use GOQii. So even when, her leisure time is being used so productively. So I think that's kind of the takeaway from Suneeta's journey, and what rest of the people could, use from that. Ritika, what do you have to say? I think the mantra that entire world can take away from her story is graceful aging. The way she looks, the way her confidence has grown. So graceful aging is the need of the hour currently. We all know Women's Day, and that's the hot topic. So I think that is one